you, media friends, for covering this press brief in such a short notice. So today, on 5th March, the Cabinet has met in नीति विहार Chief Minister's office to discuss on certain important issues which was placed in the Cabinet. So there were 3 agendas and 1 table agenda. So the 3 agendas I'll just read out for your information. So first was the Arunachal Pradesh Horticulture Policy 2025, and second was New Agriculture Policy Arunachal Pradesh 2025 and Arunachal Tourism Policy 25-30. And the table agenda was the business allocation rules for the working agencies to take up which departments for executing the work. So I'll go in brief one by one about the policies which has been discussed in the Cabinet today. So the first was Arunachal Pradesh Horticulture Policy. The major important points in the policy which was discussed and were passed by the Cabinet is like to increase the horticulture production and productivity, and the second was promote sustainable climate resilient horticulture practice and infrastructure development across the value chain, and capacity building and skill development, mission mode development, branding and marketing, research and development, human resource development, fund for sectoral development, promote convergence. So, and significant initiative under the policies are like Arunachal Kiwi Mission. As we all know, Arunachal is the largest producer of the kiwi in the country, and the mission envisioned with the objective to harness the state's immense potential in kiwi production and positioning it as a leading contributor to the national horticulture sector. And second was Arunachal Spice Mission, and there is a tremendous scope for cultivation of high value spices like large cardamom, black pepper, Szechuan pepper, star anise, turmeric, ginger, etc. And to harness the potential of the spice sector in this state, the spice mission is envisaged in the policy. And secondly, the Arunachal Aromatic and Medicinal Plant Mission. In this, to harness the untapped potential of a medicinal and aromatic plant for large-scale cultivation and supply to Ayush-based industries, the mission will also aid in conservation of biodiversity and associated traditional medicine system, because we have a lot of folk medicine in practice, and we being the part of the Himalayan range, we have very rich medicinal plants which needs to be harnessed. So in this line, the mission has been envisaged. And secondly, the empowering women, and we keep saying we need to empower women. So in this horticulture policy, the policy includes intervention for the gender inclusion and budgeting in the horticulture sector to empower women farmers by livelihood generation and nutritional security, and empowering the young farmers to attract young farmers in the adopting horticulture farming as occupation through skill development and horticulture entrepreneurship, and sustainable and climate resilient horticulture to address the challenge of climate change, climate resilient sustainable horticulture practices with focus on integrated farming system and discouraging the indiscriminate use of chemical in farming, because we all know the inorganic kind of farming has been leading cause of many kind of ailments and diseases. So the policy encourages in organic farming, so that will see to it that how the organic farming takes place in Arunachal and try to make it 100% organic state in times to come. And in the agriculture policy, there have been many important points were undertaken in the policies, like embarking on a extra expansion by land terracing and convergence of zoom land cultivation to permanent cultivation in the hilly terrain, because the age-old tradition of zoom cultivation, which is not only destroying the ecosystem, this also raised a question about the sustainable way of agriculture system. So this has been
work out in the policy, and extending irrigation facility and promoting water harvesting to the conservation, and increasing agriculture productivity by supplying certified seed, planting materials, better extension services through KVKs, promoting multi-cropping techniques and adopting modern techniques. In the past, we have seen that in the name of seed, we get like uh, very low grade seeds, and sometimes we get certain planting materials which doesn't adhere to the climatic conditions and the locations. So this will be mapped properly so that the planting materials and the seeds goes to the right place, which has got the right kind of soil condition and the climate and weather condition. And crop diversification, shifting from a traditional low value to high value crops, and adopting high yielding varieties to increase the income of the farmers, and shift from labor intensive to more farm mechanized cultivation. So these days we have seen that the labor cost also has become very high. So more mechanized way of farming is envisioned in this agriculture policy, and involving educated youth and young age group, particularly in contract farming and agri startups, checking crop damages by wild and domestic animals by providing community farm fencing, and introduction of innovative fencing like solar fencing and all, which is very effective in warding off the animals which comes and damages the crop, and increasing the capacity of self-help group FPOs etc. by providing hand holding through training and capacity building, further promoting the traditional organic cultivation by following natural farming, which we said it will be part of the organic farming, and promoting commercial or cash crop like tea, rubber, coffee, oil palm etc. along with the food crops, promoting contract cultivation projects on PPP mode, inviting private investment in the state agri sector, intensifying the national mission on edible oil, both oil palm and oil seeds, and in developing farm infrastructures like storage facilities, collection center, drying and packaging facilities for value addition, because a lot of our products has got very less shelf life. So just to give more value addition to this, all this kind of initiative will be taken up under this policy, and establishment of market link through ENAM and regular buyer and seller meets, and even in the later situation, we might get the e-commerce on board, to facilitate the marketing for the farmers, and promoting concept and practice of integrated farming system amongst the farmer, training of officer and staff of the department on the modern and latest knowledge and technique of agriculture, augmenting department human resources to cope with the increasing workload, and focus on research and development activities through new R&D wing, because one of the most important thing which we have seen is the research and development. So main focus is being given for research and development in the agriculture sector to improve the productivity and more sustainable way and more healthy products, and improving the method of collecting agriculture data and its digitization, providing credit link and working capital to the farmers, adopting latest technology like using drone and artificial intelligence. And the policy shall be for the period of 2025 to 35. This is policy is for 10 years. While preparing the policy, the officials have traveled to the districts for interaction, and the district level officers, KVK, PRI members from SSG, FPO, etc. The Director of Agriculture has also provided inputs and information for preparing the policy documents. The draft of the policy document was forwarded to the stakeholders, and their opinion was suggested and obtained. So this was like an inclusive kind of policy where everyone has been taken on board to understand how best we could come up with the agriculture policy to benefit each and everyone. And the last was the Arunachal Tourism Policy 2530. So this policy is for 10 years to promote tourism in Arunachal Pradesh. So the key initiatives in this policy is enhancing infrastructure and connectivity, strengthening road network, eco-friendly accommodations and digital tourism platforms. And secondly, promoting niche tourism segments like ecotourism, adventure tourism, spiritual and pilgrimage circuits, farm tourism and wine tourism, and empowering local communities, encouraging homestays, handicraft, rural tourism to generate employment and boost local economies. Sustainable and responsible tourism, emphasizing eco
to friendly policies, conservation, and minimizing the ecological footprint of tourism activity, and PPP and investment, encouraging private investors in tourism, infrastructure, and adventure sports and hospitality. And the major initiative under the policies are farm and agro-tourism, promoting farm stays, organic farming experiences, and rural tourism to showcase Arunachal's agriculture heritage. And secondly, wine tourism, development of local fruit-based wine industries like kiwi, persimmon, guava, and the collaboration with the national wine associations to promote wine tourism, because we have seen that wine tourism is a big thing abroad. If you go to all those wine growing country like France, or for that matter even California and all those places, they make a lot of money out of the wine tourism apart from the retailing of the wine. So we also think, since we have already 2-3 main wine producers in our state, so this could boost their productivity and sale also. And spiritual and pilgrimage tourism, establishment of Buddha circuit linking Tawang Monastery, Kenzemani, 𝘁𝗵𝗂𝗶𝗃, and Parshuram Kund with national and global heritage promotion. And eco and adventure tourism, strengthening trekking, rafting, paragliding, wildlife tourism with the community participation. And lastly, development of hot water springs and wellness tourism, promoting eco-wellness retreats, traditional healing therapies, and Ayush-based naturopathy. As like said, we already have a folk medicines in practice, traditional healing in practice. So we want to revive so that it attracts the tourism, and as well as it will contribute to the local economy, those who have been practicing all those traditional wellness system in our state. And for employment and economy, direct employment in hotels, homestay resorts, farm stays, and tour operators, and transport and adventure tourism, and indirect employment like agriculture, handicraft, food processing, and event management, and estimated to increase the annual tourist footfall and contribute significantly to the state's revenue and livelihood generation. And we are aligning with the 𝗂𝗏𝗏𝗏 𝗏, the Arunachal Tourism Policy 2530 aligns with 𝗂𝗏𝗏𝗏 𝗏 by boosting self-reliance through local skill development, training program for tour guides and hospitality professionals, entrepreneurship growth, supporting the indigenous tourism startups, and handicraft industry. These were the three policies which has been adopted in the cabinet and passed by the cabinet. And lastly was the business allocation rules. Like we see, we have like many departments which doesn't have an engineering wing. So any kind of developmental work which comes to the department, we have assigned particular engineering wings to execute the work. Earlier, what used to happen, like the department used to assign the engineering departments for executing the work as per their whims and fancies, which used to create a lot of confusion, and even duplicacy and monitoring was little difficult, since there have been too many agencies involved in one department. So now the cabinet has decided that we will have a proper business allocation for each department, so that there's no confusion, and in future also that one engineering department which will take care of which department has been already decided in the cabinet today, so that there's no overlapping and confusion and days to come while we execute the developmental work in the state. Thank you so much. Any questions? ये जो इंजीनियरिंग विंग्स वाला जो आपने बताया सर, पहले तो सरकार ने काफ़ी बार इसका ऊपर में डिस्कशन भी किया था कि इंजीनियरिंग विंग्स बहुत एक बर्डन होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि टूरिज्म हो गया डिपार्टमेंट है, तो वो लोगों को बाकी जो इंजीनियरिंग विंग्स है जहाँ इंजीनियर ही भरा हुआ है सर, वो लोगों को काम नहीं मिल जाता है ऐसे करके कभी कभी, या कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई छोटा प्रोजेक्ट होता है डाइवर्ट हो जाता है कि कौन करेगा नहीं करेगा, ऐसे करके काम भी आपने जैसे बोला कि मॉनिटरिंग का बात होता है। तो अभी जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो इंजीनियरिंग विंग है वो रहेगा ना नहीं रहेगा? नहीं, वो हमने सारा जितने जैसे हमारा एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, जितने भी है जो डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग विंग क्रिएट किया, सारे को क्लोज कर दिया हम लोगों ने, और उन डिपार्टमेंट्स का काम को किस इंजीनियरिंग विंग में देगा वो डिसाइड हुआ अभी हमारा बिजनेस एलोकेशन रूल में। तो ऑलमोस्ट ऑल द डिपार्टमेंट विच हैज़ गॉट द इंजीनियरिंग विंग ऑफ देयर ओन, इट हैज़ बीन डिसबैंड अभी उसको, और आगे से ये नहीं होगा। अगर ऑन गोइंग कुछ उसके अंदर काम चल रहा है तो दैट विल बी कम्प्लीटेड एंड नो न्यू वर्क विल बी टेकन अप बाय दिस
नॉन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स इंजीनियरिंग विंग। बेसिकली आपने जैसे 3 चीज़ का बताया, हॉर्टिकल्चर पॉलिसी, एग्रीकल्चर का हो गया और टूरिज्म का हो गया। इसका अलावा और भी आप लोग जो जैसे जैसे कैबिनेट मीटिंग करते हैं सर, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट मसला का ऊपर में डिस्कस करते हैं, तो आप लोग उस सब को भी रिव्यू करते हैं क्या सर, कि हम लोगों ने लास्ट कैबिनेट में जो लिया था उसका फॉलो अप कितना हुआ बोल के, क्या आप इसका ऊपर में भी थोड़ा कुछ नहीं जानकारी नहीं, दे सकते हैं क्या? कैबिनेट तो हम लोग एजेंडा के मुताबिक ही हम लोग डिस्कशन करता है। अगर इस तरीके से डिस्कशन करेगा देयर विल नो एंड। तो जो एजेंडा है उस पर डिस्कशन करता है, अगर बहुत एक्सीजेंसी कुछ आता है तो उस पर डिस्कशन करता है टेबल एजेंडा में। अदरवाइज एज पर एजेंडा ओनली द डिस्कशन टेक्स प्लेस। जैसे आज हमारा बताया आपको 3 है हमारा, और वो जो बिजनेस एलोकेशन रूल का परचेज टोटल 4 के ऊपर ही डिस्कशन हुआ है और ये कैबिनेट ने पास कर दिया है। सर इसका अलावा आप गवर्नमेंट का स्पोक्समैन का अलावा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स भी है। लोगों में एक कन्फ्यूजन चल रहा है सर, क्योंकि देखिए समाज का पूरा तबका को आप लोग देखते हैं और हम लोग भी देखते हैं सर। अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट का ऊपर में बहुत हजार की संख्या में, हजारों हजार की संख्या में डिस्ट्रिक्ट से लोग ईटानगर आ रहे हैं कैपिटल कॉम्प्लेक्स में। ईटानगर नहीं, कहीं और भी कोई अरेंजमेंट है, उनका प्रोटेस्ट है, खास करके एक समुदाय क्रिश्चियंस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लोगों का। तो असेंबली का बात चल रहा था, असेंबली में तो ऐसा कुछ तो नहीं लगता है सर। आप थोड़ा सा इसका ऊपर में रोशनी दे सकते हैं क्या, गवर्नमेंट स्पोक्समैन भी आप? नहीं, जो आप अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट की जो बात कर रहे हैं, इसमें लोगों में थोड़ा एक मिसगिविंग था बहुत, कि ये लोगों को किसी को लग रहा था कि ये कोई नया एक्ट आने वाला है। ये तो 1978 का है, और यहाँ पे हमारा अरुणाचल असेंबली जो अभी बजट सेशन में इस पर कोई चर्चा नहीं होने वाला है, क्योंकि चर्चा होगा भी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्ट बन चुका है। तो इसमें हमारा स्टेट असेंबली में उसको आने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इस पर रूल बनने हैं। वो भी जैसे कोई किसी ने शायद पीआईएल फाइल किया है कि 1978 को एक्ट पास हो गया, अभी तक रूल नहीं बना है। तो कोर्ट का एक डायरेक्टिव्स आया है कि गवर्नमेंट को, वाई द गवर्नमेंट हैज़ बीन स्लीपिंग ऑन दिस, वाई इज नॉट गवर्नमेंट मेकिंग रूल, इस एक्ट का रूल क्यों नहीं बना है। तो वही है। तो सिंस आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं ऐसा बताऊंगा, इस पर काफ़ी लेवल पे चर्चा भी हुआ है, तो लोगों में कन्फ्यूजन भी है, सब अपना अपना नैरेटिव दे रहा है इस एक्ट को लेके। तो ये एक्ट का जो अभी रूल बनने हैं, उसके लिए ये डिस्कशन हुआ कि हर किसी, जैसे रिलीजियस ग्रुप से लेंगे, इसके बाद हमारा सारा एमएलएज है, एमएलएज में भी जो हमारा भी अपना एमएलएज भी है जो हर मतलब फेथ एंड रिलीजन से बिलोंग करता है, उन सब को लेके एक कमेटी बना के होम मिनिस्टर का ये चेयरमैनशिप में ये एक डिस्कशन होगा कि रूल ऐसे बने कि ये किसी का प्रेजुडिस ना हो। तो इसमें हर किसी को पार्टिसिपेशन जो है कमेटी में, सब वॉक ऑफ लाइफ से लेके कमेटी में एक रूल किस तरीक़े से फ्रेम किया जाए उस पर डिस्कशन होगा। तो इसमें कोई ऐसा गलत फहमी या कोई ऐसा गलत वो आपका वो ये मन धरण कहानी बना के लोगों को, मतलब लोगों तक ये नहीं पहुंचना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेलफेयर गवर्नमेंट। जब वेलफेयर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का काम है कि सबको साथ लेके चलना है। तो मुख्यमंत्री जी ने भी यही बोला कि दिस इज़ फॉर फ्रेमिंग द रूल विच इज़ अंडर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो उसी को ही सरकार को फॉलो करना है, और सरकार आर्बिट्रेरली नहीं कर रहा है। एक कमेटी बना के आपके क्रिश्चियन ब्रदर से भी पूछेंगे, इंडिजिनस से भी पूछेंगे, और जैसे बुद्धिस्ट है, हिंदू है, जो भी हमारा स्टेट में है, सबसे सलाह मशवरा करके रूल बनेगा, ताकि ये रूल सबके लिए प्रॉब्लम ना हो। सर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने का सर, कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं क्या क्या होगा 12 तारीख तक? जी, नॉर्मल तो आपको गवर्नर का एड्रेस तो होता है, वो शायद आपको ऑनरेबल स्पीकर ने भी ब्रीफ किया होगा मीडिया के थ्रू। देन वी हैव नॉर्मल क्वेश्चन आवर्स रहता है, कुछ हमारा प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशंस है, कॉल, इसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन भी आया, मैं देखा इसका 0 आवर डिस्कशन वगैरह भी है। इसके बाद मेन जो है इट्स अ बजट सेशन, और गवर्नर का एड्रेस है, तो उस पर डिस्कशंस होगा, इसके बाद बजट का भी पासिंग होगा। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एक मुद्दा जो आने वाला है, जो हमारा एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन का ऊपर में, तो उसको हमारा जो डिपार्टमेंट और मिलके जो एक हमने रोड मैप तैयार किया, उसको भी हम असेंबली में प्लेस करेंगे, क्योंकि एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर which everyone should participate and everyone should know how this new road map is going to have an impact on the education system of Arunachal। तो इसलिए हम इसको असेंबली में लेके आए, क्योंकि कैबिनेट में होगा सिर्फ मंत्री रहते हैं, एंड अगर हमारा बीएलपी बोले तो सिर्फ हमारा
भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स रहेंगे, तो असेंबली में हमारा सारा एमएलएज रहेंगे, उनसे भी हम लोग इनपुट लेंगे, इसके बाद डिस्कशन करके उसको फाइनल फिर एक जो रोड मैप का हम लोग रोल आउट करेंगे, ताकि देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी है ना अक्रॉस, सबको पता चले कि क्या होने वाला है और कौन किस तरीके से किस लेवल पे इसको और आगे पुश करने के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसी के लिए लेके आ रहे हैं। थैंक यू।